ओके गाइस, तो इसका हम अपसेट लेंगे। विंटर पार अपसेट 315 ये है 350 विद abduct interfar line from here to here। इसको इरेज करेंगे। ई इंटरफार इरेज, ठीक है। टी आर डबल इंटरफार ट्रिम, इसको ट्रिम करेंगे। ये दोनों जो है इसको इरेज करेंगे। अच्छा जी, अब इधर एक फ्लेक्सिबल लगाएंगे। सी इंटर काफी इंटर खुली जगह में इसको रोटेट करेंगे। आर इंटर पर रोटेट, कंट्रोल प्लस जेड पर अंडू, इसको मिरर करेंगे। या आर इंटर पर रोटेट, एम इंटर पर मूव, एम इंटर फॉर मिरर, इसको इरेज करें। सी इंटर पर एल इंटर पर एक्स डबल इंटर, टी आर डबल इंटर, इंटर पर इरेज, सेलेक्ट इरेज। डिजाइनिंग जो है ना, ये डिजाइनर जो है उस पर डिपेंड करता है। आर इंटर फॉर रोटेट, अपनी किस किस्म की डिजाइनिंग करनी है, लेकिन CFM डक्ट कैलकुलेटर से हम लेंगे। उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। फिर एल इंटर पर लाइन, इंटर 400 इंटर, इंटर 500 इंटर रिड्यूसर की, इसको इरेज करेंगे। इंटर 200 इंटर, ये वाला 200, इंटर फॉर लाइन, टी आर डबल इंटर पर ट्रिम, also erase this line। इसे कॉपी लेंगे। C enter pick point, then here M enter for move, M enter for with shift unselect,
इसको इरेज करेंगे, ई एंटर फॉर इरेज, सी एंटर फॉर कॉफी। चलो इधर से कॉपी लेंगे यहाँ तक सेंटर सेंटर, ठीक है। दो और कॉपी लेंगे, सेंटर पॉइंट सेंटर पॉइंट सेंटर पॉइंट, इरेज एंटर, टी आर डबल एंटर फॉर ट्रिम, also trim this line। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, कंट्रोल प्लस एस, सी टी आर एल जो लिखे है ना, कंट्रोल प्लस एस, ये काम जो हमने किया उसको हम सेव करेंगे। फिर इसी तरह जो है ना, सी एंटर पर कॉपी, इसको ट्रिम इरेज करेंगे, और ये जो है इसको ट्रिम करेंगे, टी आर डबल एंटर पर ट्रिम। अच्छा जी, लास्ट में हम एक लाइन खींचेंगे, अपसेट लेंगे, इसका अपसेट कितना है, इसका कितना है, टी एल आई इंटर पर डायमेंशन ऑफ 150 millimeter, enter 150 enter, then trim the extra line, S enter पर stretch, अच्छा जी, 350 क्या है, ये 500 है, L enter पर line, move enter, M enter for move, O enter, sorry, O enter, 350 enter, O enter। अच्छा जी, इधर अगर हम रिड्यूसर